Students, so far we have discussed the first two paragraphs of the chapter Saviour of Mankind. The third paragraph comes up with the idea of the conditions of the society before the birth of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No doubt the society was completely ignorant, but we will study that ignorance on three grounds. The first one is religious ignorance. The Arabs were religiously ignorant क्योंकि मक्का सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ था, रिलीजियस, पॉलिटिकल, बिजनेस, इसीलिए मक्का में तकरीबन 300 से ज़ायद बुत रखे गए थे जिन्हें पूरे अरेबिया से लोग आके पूजते थे। तो हम परस्ती का ये आलम था कि अगर उन्हें एक बिल्ली या एक कौवा नज़र आ जाता तो पूरा का पूरा दिन वो घरों से नहीं निकलते थे, क्योंकि ये दिन उनके लिए मनहूस कंसिडर किया जाता। The second ground is social level. They were socially ignorant as well, क्योंकि औरतों को मुआशरे में कोई हैसियत नहीं दी गई थी, उनको कोई हकूक़ नहीं दिए गए थे, विरासत में उनका कोई हिस्सा नहीं था। ग़ुलामों के साथ बदतरीन सलूक किया जाता था, उनको न खाने के लिए न पीने के लिए दिया जाता था। मोस्टली ग़ुलामों को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। सोसाइटी में क्लास डिफरेंस था, गरीब लोगों को सोसाइटी पे बोझ समझा जाता। द थर्ड एंड द लास्ट लेवल इज़ मॉरल लेवल। मॉरली वो लोग करप्ट थे, मॉरल करप्शन जो थी उनकी डीलिंग्स में झूठ था, फरेब था। दे यूज टू लाई, दे यूज टू गैम्बल, दे यूज टू वोमेनाइज एंड दे यूज टू कंज्यूम अल्कोहल। So student, this was the pathetic situation of the society before Islam, or we can say before the birth of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In such critical time, Allah Almighty has decided to send His last messenger to lead the people from darkness of ignorance to the light of knowledge. I hope you understand this paragraph.